Hello students, today we will discuss chapter number 8, that is controlling, and in this chapter we will study about the various activities which take place in the organization to control or to minimize the various hindrances and deviations, and this is one of the important function of the management that is performed by every manager. So let's start. See what exactly controlling is. By the name you can say अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं हो रहा है या जो भी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स है या जो प्री डिटरमाइंड गोल है अगर वो अचीव नहीं हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, इसके पीछे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ डेविएशंस होते हैं. सो कंट्रोलिंग का मतलब ही होता है कि इन डेविएशंस को पहचानना, ठीक है, और इन कमियों को पहचानना और उन कमियों को दूर करना एंड टू कंट्रोल द वेरियस अननेसेसरी एक्टिविटीज एंड वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन. दैट व्हाट वी से कंट्रोलिंग इज. नाउ one question arise that controlling is the last function of management. So इसमें एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि कंट्रोलिंग को कभी भी लास्ट फंक्शन नहीं समझना चाहिए. इट कैन नॉट बी टेकन एज ए लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट बिकॉज see when you control something, if you find out some deviations according to the predetermined plan, so to complete this to correct these deviations and to correct these problems and hindrances, you have to make another planning. So it just starts a another cycle of planning and another cycle of management. So it should not be considered as a last function of management. So controlling is the process to control and to ensure that the activities in the organization are performed as per the plans and as per the predetermined standards. Next topic we will discuss that what are the various importance of controlling, why controlling is so much important. So see, the first thing is accomplishing organization goal. सबसे पहली चीज है कि ये अपने organization goals को और जो predefined standards है उनको achieve करने में मदद करती है. And how it do, see when you do the function of controlling, when you perform the function of controlling, ये हमारे सामने वो कमियां निकाल के लाती है, वो hindrances निकाल के लाती है जिनकी वजह से हम goals को achieve नहीं कर पा रहे हैं. So when we will find these deviations and we will find this various kind of problems, we will do some corrective actions and we will do something to achieve this goal. So जो कमियां हमारे सामने निकल के आई है हम उन्हें पूरा करने के लिए corrective actions लेते हैं, and this is one of the part of controlling. So yes, you can say that that controlling really helps an organization to achieve its predetermined standards and predetermined goals. Now next one is judging the accuracy of standard. Now the standards can be in quality terms or in quantitative terms. Okay, so आपका स्टैंडर्ड कितना एक्यूरेट है अकॉर्डिंग टू योर प्लान एंड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजीज, ठीक है. इनके हिसाब से आपका प्लान कितना एक्यूरेट है और आपके जो स्टैंडर्ड्स आपने बनाए हैं, वेदर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाए होंगे या फिर रॉ मटेरियल के स्टैंडर्ड्स है, तो वो स्टैंडर्ड्स कितने एक्यूरेट है, कितने टू द पॉइंट है, इस चीज को जानने में मदद करती है कंट्रोलिंग. सो यस, यू कैन से दैट इट हेल्प्स अस टू जज द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स. Next we will move, that is making efficient use of resources. See, कंट्रोलिंग का सबसे जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि टू एक्सरसाइज सम काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज जिससे कि जितना भी वेस्टेज है, जो भी वेस्टेज हो रहा है, जो भी अननेसेसरी एक्टिविटीज हो रही है, दैट कैन बी रिड्यूस्ड. एंड दिस इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, दैट इट रिड्यूस द wastage of the efforts, it reduce the wastage of the resources. So yes, it allows you to make the efficient use of resources. It definitely improve the employee motivation. And how we improve motivation, see, if the control system is so efficient, then each and every employee will know that what he have to do, because in controlling we used to determine the standards prior to do anything. हम सबसे पहले स्टैंडर्ड्स बनाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड्स वी कंट्रोल सो मेनी प्रॉब्लम्स. सो जब किसी एम्प्लॉय को ये पता होता है कि मुझे क्या करना है और मुझे कैसे परफॉर्मेंस देनी है, then he will definitely get motivated because he know in advance that what they are expected to do and what are the standards that they have to reach and how they have to perform. Moving to the next, it ensure order and discipline. Yes, definitely it ensure the order and discipline. Controlling में एक आपको एग्जांपल देता हूँ. See, it is the controlling process only कि we put the CCTV cameras in the organization and in the building and all, because इससे हमें ये पता चलता कि कौन काम कर रहा है या
if any employee is dishonest and if any employee is lethargic, then we come to know that this employee is not working. So it definitely ensure the order and discipline. Employees को भी ये रहता है कि ठीक है, we are being watched and we are under surveillance, so वो ढंग से काम करते हैं और एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है. सपोज किसी को एक टारगेट दिया गया है कि yes, you have to achieve this, and on the basis of this target you will get your wages or something like that. So if he'll not working properly, he will not get the wages. So to get this particular wages, to get this incentives, he will work hard. So automatically he will maintain the discipline in his work. So controlling definitely ensure the order and discipline in the working. Next one is facilitating coordination in action. Now how it provide the coordination, that see, हम कंट्रोल में क्या करते हैं, हम पहले गोल सेट करते हैं, हम पहले स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और अगर ये गोल अचीव नहीं हो रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या है, देन वी विल फाइंड आउट द वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो सारे डिपार्टमेंट्स को ये पता होता है कि हमें क्या करना है, एंड टू अचीव दिस थिंग दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद देयर डिपार्टमेंट्स वेदर दे वांट इट और वेदर दे डोंट वांट. सो यस, it facilitates the coordination in action, and every department and every employee are governed and they're facilitated with the predetermined standards, and on the basis of their standards they have to maintain the coordination, and the coordination will be automatically made. Formal coordination can be automatically made between them because they have to achieve the target and they have to achieve the goal. So these are the various importance, but if they are important, there are some kind of limitations of controlling. Let's see what are the limitations. See, the first limitation is given in NCERT book is difficulty in setting quantitative standards. See, no doubt controlling is very much important and is one of the important function, but sometimes it is very hard to define and hard to set the standards in quantitative terms. For example, आपने अगर ये सेट किया है कि ओके हमें ईयरली 15 टन का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, सो 15 टन का प्रोडक्शन आपने किया, सो समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट आफ्टर एनालाइजिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल that business environment never remain constant, it always keeps on changing. So फ्यूचर प्रिडिक्शन करना कई बार बहुत मुश्किल होता है और इस बेसिस पे क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, कि हम इतना पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे. एंड if we are not able to set the quantitative standards, it is really make hard to measure the performance and to measure the standards that where we have to reach. So that is difficult to set the quantitative standards. Next one is little control on external factors. Yes, a business, see, there are two type of environments: internal environment of the business and external environment. See, so a manager or the employees can control some of the internal factors. Okay, कि internal policies हैं वो तो control की जा सकती है, internal strategies change की जा सकती है, पर जो external factors होते हैं, technological conditions है, government conditions है, competitions है, social factors है, they are very hard to chase and they're very hard to control. So whether the control system is very good, but yes, there is a little control on the external factors, and that can be a problem for that, or that can be a limitation of controlling. And next is resistance from employees. Obviously, if you introduce some new things, if you introduce a new control system, you will definitely find a resistance from employees because no one want to be watched. Like if we take the example of CCTV, if employees will think that we are under surveillance and we cannot work freely, so definitely they will resist this control system, and it can be a, one of the limitation of the controlling, that it get resistance from the employees because they think कि ये उनकी फ्रीडम पे एक कंट्रोल किया जा रहा है, या फिर ये सोच सकते हैं कि दिस इज नॉट a good system, हमारी फ्रीडम खो रही है. So yes, they can get the resistance from employees. Moving to the next, it is a costly affair. Yes, controlling is not a cheap process as like planning is a costly process, so controlling is all about to survive, to put the surveillance on the whole plans and whole objectives. So it is definitely not a cheap process, and it is a very costly process, is a very costly affair, and it can be this makes a controlling a uh, limitation of limitation. The costly affair can be a limitation of controlling because it involves a lot of time, lot of expenditure, and a lot of efforts. So these are the various limitations of controlling. Your next topic is relationship between planning and controlling. This topic has been removed in this year from your board exams. And next topic that we have to discuss is controlling process. It's quite important one. See, the 2 points are given here, that planning based on facts
makes controlling easier and effective, and controlling improves future planning by providing information derived from the past experience. See, इन दो पॉइंट्स का मतलब ये है कि अगर आपके प्लानिंग फैक्ट्स पे बेसिस है तो कंट्रोलिंग करना बहुत इजी होता है, ठीक है। एंड कंट्रोलिंग के बाद में हम एक नई प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। सो कंट्रोलिंग हमने की है, वी फाइंड आउट द डेविएशंस, उसके बाद में हमें एक बेटर प्लानिंग करने का मदद मिलता है। सो दिस टू पॉइंट यू कैन रिमेंबर बाय दिस। नाउ विल मूव टू द कंट्रोलिंग प्रोसेस। नाउ द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज setting performance standard. The first and foremost, you have to set the standard to which you will compare your actual performance. Okay, आपने अपना स्टैंडर्ड सेट कर दिया। फॉर एग्जांपल, आपने एक परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट कर दिया एम्प्लॉयज के लिए कि एवरी एम्प्लॉयज हैज टू वर्क 8 hours a day. On the basis of that 8 hours, he will get his wages and he will get his salaries. So the 8 hours is a benchmark for the working of the employees. Okay, so what is 8 hours? 8 hours is a performance standard for any worker, and we can set performance standard in every segment of the organization. We can set the performance standard for the employees, we can set the performance standard for the machines, and we can even set the standards in raw materials and any kind of product. So the first thing is setting performance standard. Moving to the next, measurement of actual performance. Now you have seen, see, you have already decided what are the predetermined standards. You have actually set the performance standard. Now you will measure your actual performance. Okay, standard तो बना हुआ है, लेकिन अब आप ये देखेंगे आपकी actual performance कितनी आ रही है, how much you are performing, which can be very effective and which can be very efficient for the organization. And after measurement of actual performance, you will definitely compare your actual performance with the, yes, the third step, you will actually compare the actual performance with the standards. Okay, आपकी standard performance कौन सी है और आपकी standard performance आपकी क्या है और आपकी actual performance क्या है. Now you have to compare both the performance in an order. And why you will while you compare, you have to compare to find out the deviations. Yes, to find out the deviations. Okay, what are deviations? Okay, deviations है जब आप परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस और जब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं तो उनमें जो डिफरेंस है, जो कमियां निकल के आती है, उन्हें हम बोलते हैं डेविएशंस। और इसके बाद में, सॉरी, इसके बाद में हम लोग इसको एनालाइज करेंगे that what are the various kind of deviations, and what are the various kind of differences we find out by comparing actual performance and standard performance. Then we will analyze the deviations, and we can analyze the deviation by two ways. One is critical point control, and next one is management by exception. Now what is critical point control? These are the two ways, these are the two techniques by which we can analyze the deviations. Critical point control is something, see, it is not it is really not economical, and it is not cheap to look out or to focus on every result area. Okay, to focus on each and everything. So we find some key result areas given here, KRA. हम कुछ की रिजल्ट एरियाज देखते हैं जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मेन रिजल्ट्स देते हैं, या जो एक कोर एक्टिविटीज होती है, हम उन पे फोकस करेंगे. एंड टू फोकस ऑन दिस वेरियस KRAs, वेरियस की रिजल्ट एरियाज, इट इज नॉन एज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. नेक्स्ट वन इज मैनेज बाय एक्सेप्शन. सो हमने पूरा एनालाइज किया और हमने बहुत सारी कमियां निकाली, बहुत सारे डेविएशंस निकाले. सो हर डेविएशन पे वर्क करना पॉसिबल नहीं है, हर कमी पे वर्क करना पॉसिबल नहीं है. सो हम सिर्फ कुछ कमी पे ध्यान देते हैं, जो कोर कमियां होती हैं, जो कोर डेविएशंस होते हैं, एंड दैट टेक्निक इज नोन एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. एंड लास्ट स्टेप is taking corrective action. हमारे पास कमियां हैं, हमारे पास deviations है. Now we have to make some steps, we have to take some actions to correct the deviations and to start another planning. So this is all about the steps, limitations, and importance of controlling, and this is all about this chapter. And the next the various techniques are given, they are not in your course. So this chapter is over. Please go through this chapter and go through your NCERT book. Thank you very much.